Okay, good morning, everyone. I'm Chavan. I'll be the host today. And along with me, the speaker, Mr. Mohit Aggarwal, is here. We'll be speaking about how to trade in options, how to find opportunities using Strike, OI Insights. Just to give a brief description about Mohit ji has been a full-time trader for the last 10 years. And he keeps very low profile himself on social media, not very active, so you will not find him much, but he has been very kind enough to do this webinar and share the way he has been using Strike and how he is able to trade in options. So he'll be taking you through the webinar, and in the end, Q&A rahega. This will be a mix of Hindi and English both. And yes, I request everyone not to start the video, please. We'll start the webinar. Okay. And any questions, keep a note of it, and in the end you can ask it. He'll be able to answer it. Mohit sir, you can start. Okay, you can Okay. share your screen and you can. Yes. Okay. Good morning, everyone. As Chavan ji ने जैसा कहा कि today's discussion points will be on using strike for an options trader. Mohit sir, Okay. 1 second. सबसे One पहले second. I'll share Mohit sir, screen. 1 second. Is I everyone cannot able to share. see screen? Yeah. Can you? Yes. Okay. Can you share your screen, Mohit sir? Yes. Just Now I can. Yes. Share. Done, sir. दिख रही है मेरी स्क्रीन और नथिंग नहीं. अभी Just click on share screen, sir, and then you have to share. no, it is. I maybe have to stop on it. Yes, now it is fine. And just everyone, if you can confirm if you are able to see Mohit sir's screens, you can put it in the chat, please. Yes, okay, perfect, Mohit sir. Yeah, you can start. Yes, thank you. Thank you, Chavanji. Chaliye, let's start with first. Let's get into the statutory part first, which is most important. This is a statutory disclaimer. I am not a SEBI registered investment advisor. मैं एक सिंपल सा ट्रेडर हूँ आप लोगों की तरह. Today's discussion will solely be on Strike platform. How we can improve our odds using Strike platform in options trading. ठीक है जी. तो क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस होंगे, तो this will not be a buying or selling recommendation. It is only a process we will be highlighting, and please don't take it as a trade recommendation. Now this gone, we'll start with options buyer. मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, राइट? तो today's discussion will be on option buying only, not from option selling perspective. The option buyer is always facing a fight against time, क्योंकि 3-4 दिन में ऑप्शन प्रीमियम डिके happens and our viewpoint may go, but the option में प्रॉफिट नहीं होता. तो हमें we want to enter into the momentum phase. अब थोड़ा बेसिक्स में चलते हैं हम. How the price basically moves in a trending phase. First a trending phase comes, then consolidation happens. उसके बाद again the strong move happens, and then again for few bars. I am saying bars, not days, because I use 15 minutes and hourly charts. So for few bars, the consolidation again happens. We as an option buyer would like to enter in these arrows, green arrows जहाँ लगे हैं, या फिर red arrow, क्योंकि वहीं पे पैसा बनेगा. ठीक है? So for that, how can we find these arrows? We need help of either the price action, जहाँ पे जैसे rectangular consolidation या triangular consolidation के बाद breakout आता है. But since, as you know, there are more than 180 stocks in
FNO, or 100 120 stocks की options are liquid. And if I am trading on a 15-minute or an hourly chart, it is not feasible for me to scan every chart every minute or after every interval, right? So we'll take help of an indicator, and plus second help we'll take is from the options OI. So which indicator we use? We use the Bollinger Band. Bollinger Band basically tracks the volatility of the price. So it, अगर आपने Bollinger Band कभी देखा हो तो it follows a particular structure. It squeezes, which we call it contraction, and then it explodes with the price move, right? So we like this arrows. हर consolidation phase के बाद the expansion happens. So when the Bollinger Band is in contraction mode, we don't want to buy the options. Why? Because we don't know when till when this consolidation may continue. है ना? हमें we want to enter at a place where we are sure कि the Bollinger Band volatility is going to explode in this particular script. So again, coming back to कि I cannot scan every chart every hour, right? So we need take of a scanner. अब वो scanner कहाँ से मिलेगा? Strike has a beautiful scanner in it, right? I'll show you. If you have used Strike, so we go to the discover section into the scanners, and there are these technical scanner. वहाँ पे हमारा Bollinger Band है, right? Simple thing to scan is early band widening. So I use this scanner on an hourly chart. Okay, because I am an option buyer, we play only the hourly cycle. See, why we use an hourly chart? We cannot depend on a daily movement, right? Because एक दिन में 5-7-10% की मूव आ गई, उसके बाद if I try to enter into an option, next 2-3 days it may go for a consolidation. The whole purpose of entering an option or buying an option goes for a toss. So whenever we see a expansion, we go to this scanner. Basically this scanner, इसमें आप you can use the baskets. There are different baskets, right? So our focus is only on the FNO baskets. So all the FNO stocks are here, and we use the hourly chart because the lowest time frame is hourly, and we use this early bands widening. So basically this early band widening gets me to a place here, okay, where the arrow starts to go up or down. Now I don't know whether this price will continue up its journey upwards or not. So it may happen, like if we see in stock like this. So this is an hourly chart of लाल पाथ लैब, right? अगर आप ये देखिए, the price consolidating here, this ये इस position पे Bollinger Bands are getting squeezed. This यहाँ पे expansion start हुआ. Now the question is, ये expansion यहाँ तो चल गया, ठीक है? It gave me a 2-3% move. But next phase में ये expansion जो है, इस expansion के बाद again it contracted for few hours, right? And the price retraced. But this expansion gave me a good 7 to 8, 10, and it continued. See, even if I have been able to capture this 2400 to 2260 moves, it would have been a good kill, right, for an option buyer. So Bollinger Band's standalone basis does not give me a confirmation कि move आएगा. It is an early indication that the move is going to happen, right? So we take the next thing we use is we take help of the options OI. अभी options OI में let's get back to basics of open interest first. I'm sure सबको लोग जानते हैं यहाँ पे, but just to refresh as a refresh course, futures के open interest में there are 4 quadrants, right? एक stock contract की journey में, so there is the journey starts with a long build up, उसके बाद then the long unwinding happens,
then futures उसका short built up होता है, then it goes to short covering. This whole cycle goes on and on. समय के चक्र की तरह ये चलता रहता है, right? ये है फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट का साइकिल. इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो देन मिस्टर जय वोरा हैज डन अ फैंटास्टिक वेबिनार ऑन identifying medium term reversal with the help of open interest. In this, I'll show you there. Webinar, if you go on educational, so this webinar we are talking about. He has explained this futures open interest and this cycles and how a futures player can use this strike very efficiently. चलिए कमिंग बैक टू टुडेज डिस्कशन ऑन ऑप्शंस. अभी फ्यूचर्स में तो देर आर 4 स्टेजेस, राइट? ऑप्शंस में हमारे पास सिर्फ 2 स्टेजेस है, या तो शॉर्ट बिल्टअप होगा या शॉर्ट कवरिंग होगा, राइट? अब शॉर्ट बिल्टअप कब होगा? व्हेन ओपन इंटरेस्ट राइजेस इन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक, वी से इट इज अ शॉर्ट बिल्टअप. व्हाई वी से इट अ शॉर्ट बिल्टअप? बिकॉज वी assume or it is not assume, it is known. देखिए हमेशा राइटर, वी कॉल ऑप्शन राइटर एज द स्ट्रॉन्ग हैंड. वाई? क्योंकि वो 2-3-10 हज़ार कमाने के लिए 2 लाख की कैपिटल ब्लॉक करता है. एंड इफ ही टेक्स एन ओवरनाइट रिस्क, ही इज टेकिंग अ ह्यूज रिस्क. कल के दिन अगर 3% स्टॉक ने ओवरनाइट उसके अगेंस्ट मूव दे दी तो ही विल बी मेकिंग मोर लॉसेस देन ऑप्शन बायर. मेरा क्या है, मैं तो 10,000 की ऑप्शन बाय करके चला हूँ, नेक्स्ट डे आई नो माई रिस्क इज डिफाइंड, although that is 100% loss, right? But for an option writer, it goes beyond 100%. His some days on a circuit days, his whole capital can be wiped out. So whenever writing happens in a particular strike, we say open interest has risen and there is a short bid. और जब वह ऑप्शन राइटर कवर अपनी एक्सपोजर को कम करता है, so we see open interest reduction in that, right? So it is basically short covering. हम ऑप्शन बायर्स वी फोकस ऑन दिस शॉर्ट कवरिंग. व्हाई वी फोकस ऑन दिस शॉर्ट कवरिंग इन ऑप्शंस? देखिए अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज अ प्राइस रेजिस्टेंस, दिस इज प्राइस बेस्ड सपोर्ट, राइट? अभी ऑप्शन राइटर जो है, व्हेन ही राइट्स अ पर्टिकुलर स्ट्राइक, सपोज उसने पुट स्ट्राइक राइट की, रिलायंस की बात ले लेते हैं, उसने 2800 की स्ट्राइक पुट स्ट्राइक राइट की है, and another option writer has started writing 3,000. So they are pressuring the price not to move beyond that boundary. At a particular time when a strike has a maximum open interest, it becomes your strong support and strong resistance, right? अगर वो पुट में हाईएस्ट ओपन, so we are talking about the highest open interest वाली strike, both in terms of put and in terms of call. अब इस चार्ट में अगर आप देखोगे कि beyond this range, within this range, there are 2-3 other swings also, right? So there is a possibility that during that period, somebody has created a shorter range for that market. ठीक है? So this is what we call a, और हमारा काम है हमें उस ऑप्शन राइटर को पकड़ना है which is very confident and the price will not move beyond that range, and we need to see him in pain, ठीक है? because his pain will be our gain. ठीक है जी? चलिए, तो how will find in strike? तो strike में there is in analyze section we have an option module. ठीक है? तो दिस इज एन ऑप्शन मॉड्यूल. सबसे पहला पेज आपका ओपन इंटरेस्ट का होता है विथ ऑल द स्क्रिप्ट्स एंड द एक्सपायरी डेट्स, राइट? अगर हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे तो हम स्टॉक को ही लेते हैं, लाइक दिस इज अदानी पोर्ट. सो इफ वी सी दिस इज अ करंट सीरीज, ठीक है? इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1300 कॉल पे है एंड द हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट इज 1200. सो मोटा मोटी मार्च एक्सपायरी तक दिस इज द रेंज विच द पीपल थिंक that Adani port will be able to hold, right? Now
अब ये हर चार्ट में जाके तो हम नहीं देखेंगे. सो वी हैव अ स्क्रीन where strike OI insights. This we have 5 options: below support, neutral, near support, near resistant, above resistance. अभी इसको हम फिर वैसे ही समझते हैं. सपोर्ट तो बेसिकली highest open interest. So the strike which has the highest open interest, like in Ashok Leyland, the highest open interest is at 180 call, right? And the highest put open interest is at 170 put. So basically this is the range, right? 170 to 180. If now I have clicked on combined OI क्योंकि मैं combined OI पे काम करता हूँ. For this particular series March, this is again the range, right? Now अगर हम combined OI पे click, combined OI means this open interest includes of current series, next series and the far month series. जहाँ पे भी जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन है which the NSE has and is being traded, उन सबका ओपन इंटरेस्ट कंबाइन करके दिस रेंज विल बी कैलकुलेटेड. ठीक है, 170 टू 180. अभी हमें इस रेंज के बाहर खेलना है. सो व्हाट वी नीड इज वी विल फोकस ओनली ऑन, अगर अच्छा इनके बारे में बता देता हूँ. बिलो सपोर्ट न्यूट्रल. फर्स्ट विल टेक द न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स the price, Exide Industries current price is 307. Call the resistance is at 330 and the support is at 290. So basically ये कहीं भी मूव कर सकता है. 330 तक भी जा सकता है, 290 तक भी जा सकता है. It is in between, an indecisive area. So these contracts are of no use to me as an option buyer. These contracts are very much useful for an option sellers. Okay, they can again create a triangle around the support and resistant areas and earn the money, right? Second comes your near support. Near support, so we have a Bosch 30,000 support area as the PE has the, but this is not a good example. Let's take an Infi. So we have a 1500. Basically, if the price of the contract is within 2% of the support and resistance, support area, right? The highest PE open interest. So that we calculate the support, near support. जय है क्या चवन जी? Okay. So in Infi we have a 1500 put option as the highest open interest and price is at 1540. Hello. Yes, Jay is there. Yes. Yeah. Yes, Jay, Mohit. can you tell me system में ये support का क्या validation? Is it 2% or less than 2%? It is 1.5%. 1.5%. Okay, thank you very much. Yeah. So basically, if the price is within 1.5% of the strike with highest open interest, okay, so that becomes near support and your near resistance. Okay, so here also option sellers. So basically, every option module is built with thinking of option sellers कि वो इसको कैसे यूज करेंगे. ठीक है, it is up to us as an option buyer to use that module to our advantage. हमारी advantage कहाँ पे आएगी? When it is above resistance or when it is below support. Now the question is, point here is कि the stock has broken its support. ठीक है, अभी if I go by the price support and resistance, stock has broken its support, तो वो नीचे जाना चाहिए. ठीक है, बट मुझे ये देखना पड़ेगा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट से, बिकॉज राइटर में भी स्ट्रॉन्ग, buyer is not that strong always. So there are strong hands which are still writing, like in this case of अगर हम अशोक लेलैंड को देखें, price is below support, okay, 167 पे, support is 170, but still there is an open interest change of 1.5%. So is this that the people are expecting this to move up? Maybe not, right? वो बाकी तो प्राइस बताएगा. अगले दिन अगर कोई न्यूज़ फ्लो आ गया अशोक लेलैंड के अगेंस्ट, तो वो प्राइस गिर जाएगा. दैट इज टोटली डिफरेंट. सो हाउ वी डू इट इज
We filter on above resistance. Above resistance पे हमारा main focus रहेगा resistance side पे, which is a call open interest, and we are looking at a double digit change in open interest, especially the reduction. Okay, like in this Colgate Palmolive, the price has moved up. Price has given, मतलब it was a green day, yes. So price has moved up from a support, has given breakout about 2700, which a reduction in 26%. ठीक है, हम दूसरा ले रहे हैं इंडसइंड बैंक, राइट, 1500 की रेजिस्टेंस तोड़ी है उसने, बिकॉज इट मूव 1.5%, अराउंड 2%, तो मतलब ये 1490 1495 से स्टार्ट हुआ है द प्राइस. On Thursday the price was closing was around 1490.95, and the option writers at this 1500 strike has moved. So we will have to make a combination of Bollinger Band and this. Now it happens for above resistance and for below support. Same thing, right? We are looking at a price movement in negative, and we are looking at a put open interest change in double digit negative, right? अब लेकिन आप ये देखोगे अंबुजा सीमेंट में price has moved in green, and there is a strong build up in 60% build up in put strike. So the prices again might go up. So अभी again we come back to अभी finally price is भाव भगवान जी, right? तो हमें प्राइस पे ही डिपेंड होके चलना है, बट दिस एड्स अस, दिस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई सम स्टॉक्स कि हमें कौन सा स्टॉक देखना है. So we'll start with the above resistance. I go with say Zydus Life, Indus Tower, चलिए Apollo Hospital लेते हैं, right? And we go to I trade on hourly chart. Option buyer, we need to trade on hourly cycles. Daily cycles हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं. हम we will make 60% of the time losses. ठीक है. So now the question here is, अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल has gone above resistance, right? But चलिए मैं आपको थोड़ा पिछले stocks which I traded, I'll show you that. The stock which I traded, हाँ, this option model was launched in the end of January. ठीक है, तो first stock which this model helped me trade was, it was a very good setup. I'll show you how. On अभी हम बॉलिंगर बैंड हटा देते हैं, ठीक है. अगर आप प्राइस पैटर्न देखेंगे, सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रायंगुलर का कंसोलिडेशन विद अ हायर लो, राइट. असेंडिंग ट्रायंगल किसी को भी पता है असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा. दिस स्कैनर केम इन एट on 2nd February 9:15 a.m. early widening of Bollinger Band scanner. It was a perfect scanner. Now I had to go back to that to check. अब क्योंकि मैं whether on second, on first, what was the open interest of this particular कॉन्ट्रैक्ट. तो आईओसी में फर्स्ट को हमें देखना है. सो वी गो टू ओपन इंटरेस्ट.
go to 1st February, right? तो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी आपकी करंट एक्सपायरी ही आ जाएगी. Whenever you change the date, it will always. So on the 1st of February end of day, the IOC contract had broken above resistance with a double digit decrease in my resistance का ओपोनेंट कॉल ओपोनेंट, ठीक है ना. उसके बाद it gave me a scanner, it is going above. It was a very good entry for me. And honestly I was surprised myself कि उस दिन उसने 7% का मूव एक ही दिन में दे दिया. ठीक है, ये पुरानी बात होगी. सो व्हाट हाउ आई डू द प्रोसेसिंग इज we first scan on the based on open interest. आप दोनों तरह से कर सकते हो. अगर आप लाइव मार्केट में करना चाहते हो तो देन यू गो फर्स्ट फॉर द स्कैनर में आपको अर्ली वाइडनिंग देखना पड़ेगा. अर्ली वाइडनिंग का स्कैनर लगाना पड़ेगा. इफ एनी स्टॉक व्हिच गोज अप और डाउन comes into that scanner, then you come here. Agar if it is going up, so we go to the above resistance part. The scan has broken out of something, so we come and we see whether the open interest in our resistance is decreasing or not. If it is not, so then it is a very good case of a reversal, right? But if it is decreasing, then it is a very good case of that the trend will continue. So हमें तो यहाँ तो ट्रेंड ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल चाहिए, ठीक है ना. ये जैसे दिस वाज द आईओसी केस. आई एम टेलिंग फर्स्ट का हमारा रिडक्शन हुआ ओपन इंटरेस्ट में. स्कैनर सेकंड मॉर्निंग में आया बिकॉज दिस वाज अंडर माय वॉच लिस्ट. स्कैनर सेकंड में आया एंड आई वाज एबल टू राइट. एंड दिस वाज द न्यूज फ्लो ऑफ योर IGL. सी फिफ्थ को योर, अभी ये देखिए, अभी हमने बोला कि स्कैनर में आपका इट इज कमिंग, देयर इज एन एक्सपेंशन इन देयर. इफ यू सी एट द टॉप IGL का मैं चार्ट आपको, दिस इज अगेन 15 मिनट्स यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ. 15 मिनट. अभी आप अगर आप देखोगे तो दिस वाज अ स्मॉल expansion of this Bollinger Band here, right? But my open interest suggested something else. That suggested that there is a 120% increase in that resistance. So this definitely break out. और if we see, क्योंकि अगर आप देखोगे दिस 456 को तोड़ के ये 460 462 तक गया है, राइट. ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी, ये रेंज. We can say this was the resistance, right? इसको तोड़ा उसने 462 तक गया. But my open interest says that there 460 the writers have come in. Why have they come in? I don't know. My pattern here is again it is a for somebody who is who trades patterns. तो उसको पता है राइजिंग वेज पैटर्न का क्या होगा हो सकता है, right? So that's all we do, right? So next day there was a news, Jeffries has downgraded the city gas distributors, and it gave a gap down, but the gap down was not sufficient for the option writer who came in on the previous day evening. He was not satisfied with that 1% gap down. Okay? So when he wanted to press in more, I wanted to encash on the other side.
Again 5 to 6% move. So basically we focus on things like open interest reduction in double digit when BB is expanding, right? And continuation. Heavy open interest addition in or PE. Other is index or some new slow company. Is it? ये तो आपने देखा इसका न्यूज़ फ्लो का. I'll tell you, I'll show you example of how price rejection we can capture, right? इसमें कोई न्यूज़ फ्लो नहीं है, so that was हमारा buy call. We मैं रोहित सेटअप पे बार बार इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेटअप आई नीड टू फॉर एन ऑप्शन ट्रेडिंग. और दी बॉलिंगर बैंड और एवरेजेस सब लगे हैं तो इट हेल्प्स मी ऑटोमेटिकली बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. बट दिस इज ऑन आर्ली, स्कैनर इज ऑल्सो ऑन आर्ली, सो इट मेक्स सेंस. ये एक चैनल बना रहा था, राइट. द प्राइस मूव्ड फ्रॉम 29 जून on the to the upper end of the channel. 300, 4, 307, right? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करी तो हम छोड़ ये, ठीक है. ये हमारा इतना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट किया 307. द क्लोज वाज एट 395, राइट. What happened on 5th February? The close was below 300, but the price has already given horizontal breakout. Channel resistance find किया, but the close was above the horizontal. So everyone was expecting a breakout to continue. But some people, some strong hands, had different things in mind. It's fifth, no? Sixth. See. Price ने breakout दिया, but channel resistance पे किया, and the open interest showed me that there was 96% addition in this strike. So resistance मेरी और strong हो गई. The price resistance has been broken, but my open interest resistance has become more stronger. Right? Next day, it gave a gap up above 300.
See, this was the closing candle of, this is the first candle of 6th February. Closing was here, right? This is the closing. Next is a gap up, but it could sustain even 2 minutes. And what we got is a move of 300 to 282, 6%. अभी क्वेश्चन ये आएगा कि हर बार 6% 7% का मूव मिलेगा क्या, और 6-7% से क्या होगा? See, honestly, if you are trading in ATM options, 6% move in an intraday or 2 days, maximum 2 days. This setup is only for maximum 2 days. इंट्राडे में खत्म नहीं होता तो अगले दिन चलेगा, या बट उससे ज़्यादा अगर होल्ड करोगे देन द प्रीमियम डिके विल किक इन एंड यू विल अल्टीमेटली फेस प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द पोजीशन. 6% move in 2 days. ATM option, 50-55% return on option premium price minimum. और कितना चाहिए आपको? सेकेंड क्वेश्चन शुड बी, हर बार ये मिलता है क्या? नहीं, हर बार 5-6% नहीं मिल सकता. बट इफ अब क्या है कि हमें हमारा प्रोसेस देखना पड़ेगा हर बार. अब देन दैट देयर कम्स द स्टॉक सिलेक्शन. या तो आप यू आर सो गुड इन सिलेक्टिंग स्टॉक्स कि आपको 3-4 ट्रेड तो आराम से मिल जाएंगे 5-6% एक महीने में. उसके अलावा 1-2%, 1.5 से 2% डेली, दैट कैन बी डन, easily done. So why focus on those if we get four trades only of this? It's good, right? So it's all about आप उस टूल का क्या यूज करते हो. We have a very beautiful tool. ये जब टूल मुझे दिखाया था ना शिवम ने एंड चवन जी ने, so I used to do Excel, so मेरे मुंह से यही निकल गया, सर आपने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे अब एक्सेल नहीं बनानी पड़ेगी. Right? So we focus on the pain points of the option writers: above resistance, below support. We focus on open interest change on this resistance and support areas, whether it is heavy or whether the reduction is good, and we try to move into that direction. ठीक है, ये हो गया सर जो मैंने बैंकिंग करनी थी. Stopping my share. Yes, Mohit ji. So just to reiterate, you first look at आप जो देखते हो पहले बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन देखते हो, सही है? नहीं सर, मेरा ना 2 प्रोसेस है. पहले मैं आई एम मोर ऑफ ट्रेडर, स्लो ट्रेडर मतलब कि मैं एक दिन पहले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ. तो बिफोर मार्केट ओपन्स आई एनालाइज दिस स्ट्राइक ओवर इनसाइट्स, वहां पे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ. इफ आई एम नॉट एबल टू गेट द स्टॉक, क्योंकि आपका जो बॉलिंगर बैंड का एक्सपेंशन है, दैट स्कैनर तो आपका फुल डे चलता है ना, आर्ली पे लाइव स्कैनर, राइट? So if I don't find those the stocks in say my day end analysis कि मेरे को कल के लिए कुछ नहीं मिला है, कुछ मजेदार नहीं मिला है, then I keep my second part open कि मैं डे हर 1 घंटे बाद अपना बॉलिंगर बैंड स्कैनर चेक करता हूँ for band rising, band widening, sorry, and then I check on the open interest. So basically there are वो दोनों सेपरेट हैं. एक प्रोसेस में मैं पहले ओपन इंटरेस्ट चेक करता हूँ एंड देन आई फोकस ऑन, देन आई सी प्राइस पैटर्न और द बॉलिंगर बैंड्स एक्सप्लोजन, इज इट गोइंग टू हैपन और नॉट. दिस इज वन प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस इज आई स्कैन ऑन द बेसिस ऑफ बॉलिंगर बैंड वाइडनिंग एंड देन आई सी वेदर माय ओपन इंटरेस्ट इज सपोर्टिंग दैट वाइडनिंग और नॉट. ये इंडेक्स पे भी कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग ना निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करते हैं मोहित जी. सो आप कभी भी इंडेक्स पे ही अप्लाई किया है ये कॉन्सेप्ट्स? सर इंडेक्स ट्रेडिंग पे ना आप उसी एंड ऑफ डे ओपन इंटरेस्ट नहीं जमता है. इट विल बी दिस
वर्क्स बट वेरी लेस। इंडेक्स में आपको लाइव इंटरेस्ट, क्योंकि वीकली ऑप्शंस हैं, ठीक है, वीकली ऑप्शन में आपका डेली इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट बहुत सब्सटेंशियली चेंज होता है। सो यू नीड टू सी योर लाइव इंट्राडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो वो मैं करता हूँ, बट देन दैट विल बी टेक, मतलब वो मेरे को हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है। आई सी विच स्ट्राइक इज गोइंग डाउन, एंड सिंस स्ट्राइक में अभी डेटा इज समवट डिलेड, है ना, तो 5 आई एम मिनट डिले है वेटिंग। अभी। हाँ, तो आई एम वेटिंग कि आप जब 1 मिनट पे लेके आओगे ना, तो देन माय लाइफ फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग विल आल्सो गेट इजी। यस, वेरी शॉर्टली सर, हम 1 मिनट डिले पे लेके आएंगे। लाइव मार्केट्स नहीं लेके आएंगे क्योंकि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है। नहीं, हर एंड जगह यही है, मतलब आप कोई भी साइट ले लो, माय एफएनओ एंड एवरीथिंग, 1 मिनट डिले से कम कोई नहीं चलता है, लाइव यस, नहीं है। नोबडी इज लाइव पेइंग नहीं। दैट मच मनी, यस, उनका बिजनेस मॉडल नहीं चलेगा, है ना। हाँ, तो सही है। 1 मिनट डिलेड इज सफिशिएंट फॉर मी फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग में 15-20 मिनट्स में आई कैन गेट निफ्टी में 70-80 पॉइंट्स, तो मेरे दिन का काम हो गया ना, और तो क्या चाहिए। अभी अभी फिलहाल आप स्टॉक्स पे ध्यान दे रहे हो, सही है? हाँ, हाँ, क्योंकि सी इंडेक्स में अभी नहीं, ये प्रोसेस इज ओनली फॉर स्टॉक्स, एंड इट हेल्प्स कि मेरा इंडेक्स ट्रेडिंग चलता रहता है। जैसे आप, अगर आप देखो, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर से, जो ट्रेंड या कंटिन्यूएशन वाले इंडेक्स ट्रेडर हैं, वो बोल रहे हैं कि जैन फेब मार्च में इंडेक्स ने कोई ट्रेंड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया था, ठीक है, दे आर क्राइंग, क्राइंग इन द सेंस कि आई एम आल्सो, माय इंडेक्स ट्रेडिंग इज नॉट डूइंग गुड दैट वे, ठीक है, बट क्योंकि मेरा स्टॉक्स, आई फॉलोड द स्टॉक्स आल्सो, तो आई हैड एन एडवांटेज कि मेरा द मंथ वाज गुड, बेटर देन मेनी अदर्स, so I had an option to switch between stocks and index. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम Q&A पे ओपन करते हैं मोहित जी। ओके, ठीक है, इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। ओके, yes sir. यस, सुमित सेगल, सुमित सेगल, यप, Yeah, hi, Mohit ji, am I audible? यस, Yeah, you're very much audible. My question is, ऑप्शन बाइंग के अंदर मेरे को एक प्रॉब्लम आई, लास्ट वीक में बहुत ज्यादा डिके होता है प्रीमियम। बिल्कुल, तो ड्यूरिंग लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ का वी शुड बाय, और व्हेन विच आई मीन मंथ ऑप्शंस यू बाय और वी शुड बाय, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो यू कैन बाय द सेम मंथ, बट सर नेक्स्ट देखिए, मंथ के लास्ट लिए। वीक में there is one more problem, that is your margin requirement, ठीक है ना। T-4 से the margin requirement for in option buying increases sequentially, right? हम्म, But now पॉइंट हियर इज कि अगर आप कंफर्टेबल है नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन, आई ट्रेड इन नेक्स्ट मंथ ऑप्शन, मैं जैसे फ्रॉम अभी मंडे को छुट्टी थी, फ्रॉम द थर्सडे T-4 डे आई स्टार्ट प्लेइंग इन द नेक्स्ट मंथ ऑप्शन। ओके, आई डोंट ट्रेड इन द करंट मंथ बिकॉज इट बिकम्स अ वीकली फॉर यू, मतलब जैसे इंडेक्स की वीकली है वैसा ये स्टॉक्स का हो जाता है, बट इंडेक्स वीकलीज आर मोर, वॉल्यूम के कारण उनमें मूवमेंट, इरेटिक मूवमेंट आती है इंडेक्स में, तो देन those sometimes give you money, but stock options में very rarely you get a good money in राइट, current month option. और राइट, वैसे भी अगर आप 1-2 दिन के लिए चल रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आप करंट मंथ भी लो, बट देन द यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मार्जिन इश्यूज, ठीक है। अगर आप करंट मंथ भी ले रहे हो एंड यू नो दैट यू आर गोइंग टू ट्रेड ओनली इंट्राडे और एट द नेक्स्ट VTST STVT, right, then you can trade that, but then you need to take care of that margin issues. ऑलराइट, और थैंक यू। I would suggest कि अगर आप करंट मंथ कर भी रहे हो तो then go for ITM instead of ATM, in Okay. the money पे जाओ। ओके, थैंक यू। अगर किसी को डाउट्स है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, वन बाय वन विल गिव एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अप इज मिस्टर अशोक न्यायाधीश। अशोक जी, आप पूछ सकते हो। Hello, am I audible? यस सर। Yes sir. Yeah, my simple question is, at the end of the day, you do analysis for the next day. So,
How do you find out the stocks? Can you just elaborate a little? Okay. Abhi I'll show you once more. Okay. मोहित सर आपको शेयर करना पड़ेगा हाँ स्क्रीन. कर रहा हूँ. अभी दिख रही कहाँ दिख रही है ना. So at the end of the day, sir, I go to this screen first, which is option module strike OI insights. Okay. Okay. And in that I focus on, first I go for the above resistance, and for above resistance I see if the open interest has reduced substantially in a double digit. See, अगर वो डबल डिजिट में नहीं हो रहा है ना, तो दैट कैन बी वो इजीली मैनेज हो जाएगा नेक्स्ट डे. Or there is a double digit increase higher than 50%, so that is very good for me. So I मतलब अब मैं बता देता हूँ मैं करता क्या हूँ. अभी ये यहाँ पे ये सब शॉर्टलिस्ट करना जरूरी नहीं, तो आई एक्सपोर्ट इट टू एक्सेल. Right. Above resistance. Okay. चलिए, for example, I selected these two stocks and these two stocks. Then I go to below support. Below support में this is a double digit. This can go. This is a double digit increase and price is very much near, so this can bounce. Okay. Suppose these are the 6 stocks I have shortlisted. Now this is not the final list, shortlisted list. Okay, I'll go into price chart of each of this. ठीक है, जैसे मैंने आपको बायोकॉन दिखाया, तो हर केस में I will then now see, instead of scanning 180 charts, now I have reduced my scanning to 6 charts. अब इन charts के बाद I suppose I have selected these 2-3 stocks. बायोकॉन तो खैर इसलिए था, तो चलो ये हो गया ये एग्जांपल के तौर पे. So these are the my final 3 shortlisted stocks. मेरे को नेक्स्ट डे अगर इनमें इन 3 में ट्रेड मिला तो मिला, नहीं मिला तो that day was not for me, right? This is how I do the process. I mean, open interest reduction and open interest increase. Is it Yes. for shorting or buying like that? No, I am an option buyer, sir. Okay. So below support में, if the price is below your put support, okay, but there is a high addition in that same put, so that means strong hands are still entering that. मतलब वो foundation को मजबूत कर रहे हैं उसको. So price will not sustain below that support for long. It will move up again. This is my theory. In either case, you are buying that. हाँ, I am buying. I am a buyer. I don't sell any option because selling से बहुत डर लगता है. Either you are buyer at a support or a buyer at a resistance. नहीं, I am a buyer at resistance breakout or a resistance failure. Right. Got it. Go ahead. Thank you. Thank you. Yes, sir. Next. Sachin Aggarwal ji. Hello. Am I audible? Yes. Yes, sir. Could you please analyze Tata Motors for me? I'm sorry I joined a little late, so it would help me catch up with the process.
टाटा मोटर्स सर, सबसे पहले तो आई कैन नॉट शेयर द स्क्रीन चवन जी। सबसे पहले तो सर आई विल बी एनालाइजिंग टाटा मोटर्स, बट ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होगा, प्लीज Absolutely. अंडरस्टैंड। Absolutely. वी आर माय प्रोसेस इज आई गो टू दिस स्क्रीन। ये है आपका फ्राइडे का, जी। ठीक है। आई गो टू टाटा मोटर्स, जो कि आपने स्पेसिफिकली बोला है, तो टाटा मोटर्स इज 981, 1100, 900। इट इज इन न्यूट्रल जोन, सो बेसिकली फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इन नो ट्रेड जोन फॉर मी। ये कहीं भी जा सकता है। ओके। तो मेरे को नहीं पता है कि ये यहाँ पे भी टिका रह सकता है कि नहीं। 980 पे भी टिका रहेगा तो भी, तो आई डोंट वांट टू वेंचर इनटू दिस मोर रिस्कियर ट्रेड्स बिकॉज आई एम एन बायर, बट फॉर अ सेलर, ऑप्शन सेलर, दिस इज अ गुड प्लेस। Yes, And I'm also an it would option pay out seller. option. I do a lot हाँ, of straddles and strangles. हाँ, so your resistance is at 1100 and support is at 900. So strangle of 900 and 1100 again, you are safe playing that. Okay. Okay. Thank you. Thank you. सर एक क्वेश्चन है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सर मेरा स्टॉप लॉस ना इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द ऑप्शन चार्ट। ओके, That is a very big range. नहीं, नॉट, हाँ, 900 and 1100 is a very big range. हाँ सर, so that is good for option seller ना। Straddle. Up, मतलब you will not make it for, this is for a 3-month range, okay, because I am using a combined open interest 911 till May expiry, right? So it's not that कि वो सिर्फ मार्च एक्सपायरी के लिए, अगर आप करंट एक्सपायरी में जाओगे it will go down. May expiry would be close to premium of around 30-35 points. Yeah. Yes. Okay. हाँ चवन जी, आपने क्या बोला? स्टॉप लॉस। यस, स्टॉप लॉस क्या होगा आपका सिस्टम में? सर सिस्टम में स्टॉप लॉस मेरा होगा ऑप्शन के प्राइस के ऊपर। आई यूज अ 5 मिनट ऑप्शन चार्ट, ठीक है। उसके बेसिस पे द नियरेस्ट स्विंग लो, इफ आई एम बाइंग तो नियरेस्ट स्विंग लो फॉर द ऑप्शन प्राइस, दैट बिकम्स माय स्टॉप लॉस। बेसिकली क्या है, इफ आई एम ट्राइंग टू अर्न से मेक अ 50% रिटर्न ऑन ऑप्शन, मेरे को 15-20% ऑप्शन प्राइस देने में कोई हर्ज नहीं है ना। इट स्टिल बिकम्स 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है सर, क्लियर? एम आई क्लियर सर? चवन जी, यू आर ऑन म्यूट। So, sir, how can I subscribe to this? हाँ, तो चवन जी आप बताएंगे, मैं बताऊं? Yeah, Mohit, you can show him. I mean, you can go to the profile section. I'll share. And you can keep sharing the screen. It's fine. I mean, maybe at the end of the session, you can stop the screen share. Okay, sir. Done. Yeah, because you'll have to do it again and again. That's why. So, sir, the strike का जो लिंक वो है, that is web.strike.money, ठीक है? If you open, क्या खोलता हूँ मैं, web.strike.money। अब जब पहली बार जाओगे तो it will open at a dashboard। So basically this is your dashboard। यहाँ पे आएगा, कहीं भी आप क्लिक करोगे it will ask you to register। ओके, रजिस्टर करेंगे, इट इज अ सिंपल प्रोसेस। तो आपको मेरे ख्याल से 7 days फ्री ट्रायल है। यस, करेक्ट, 7 days फ्री ट्रायल। 7 days फ्री ट्रायल मिलेगा। उसके बाद देन यू विल हैव टू गो टू दिस प्लान एंड बिलिंग्स। 7 days के बाद इफ यू सब्सक्राइब, प्लान एंड बिलिंग्स में जाएंगे। सो देयर इज मंथली, क्वार्टरली एंड नॉट क्वार्टरली, मंथली, 6 मंथली, ईयरली एंड 5 ईयरली प्लान्स। Okay. Thank you. Thank you, Mr. Jawan. Yes, sir. Next is Akhil Kumar. Jay, you have to unmute Akhil Kumar.
Oh, okay. Sorry, 1 minute. Akhil Kumar. Yeah, Akhil Kumar, you can unmute yourself and ask. हेलो नमस्कार। नमस्कार। मोहित जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो हाँ ये लाइव मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, तो राइट। आप अपने टारगेट के साथ इसको कैसे कोरिलेट करते हो? एक ये क्वेश्चन। और दूसरा, जो जब आप ऑप्शन बाई कर रहे हो तो टारगेट के करस्पॉन्डिंग आरओआई पे आप काम करते हो या प्राइस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग करते हो? और जो भी आपको नंबर ऑफ लॉट्स लेनी होती हैं वो एक साथ लेते हैं या पिरामिडिंग करके लेते हैं? जस्ट आई वांट टू नो दैट आल्सो। सर मैं सब एक साथ लेता हूँ, ठीक ओके। है, बिकॉज मुझे अर्ली एंट्री चाहिए। हम्म। हाँ, आई स्केल आउट सिस्टमेटिकली, ओके। ठीक है। जैसे प्राइस टारगेट मेरा अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, जो अगर हम ले आईओसीएल का एग्जांपल लेते हैं, तो 152 के ऊपर मेरे को उस पे एंट्री मारनी थी, एंड माय इनिशियल टारगेट वाज अराउंड 165, राइट, बिकॉज द हाईएस्ट देन द नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस वाज कमिंग एट 165। ओके, सो दिस हेल्प मी स्केल, मतलब राइड दैट मूव। स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी मोहित जी। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये वाली लीजिए। सो बेसिकली ये चार्ट प्राइस पैटर्न के हिसाब से मेरे को देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, राइट। मैं अगर 152 पे एंट्री मारी तो मेरे को आगे का कुछ नहीं पता है। सो ठीक आई है। अगेन लुक बैक इनटू माय ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट कि नेक्स्ट स्ट्राइक मेरी कौन सी है जहां पे मेरे को रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, हम्म। वो दैट इज माय फर्स्ट दैट। टारगेट। ओके। ओके, और उसके बाद लाइव मार्केट में अगर इफ आई सी दैट स्ट्राइक गेटिंग कवर्ड अप अगेन, हम्म। तो आई मतलब स्केल आउट, आई स्केल आउट दैट वे। तो फर्स्ट टारगेट पे थोड़ा स्केल आउट करूंगा, देन इफ आई से दैट जो मेरी अगर 150 के बाद 160 की स्ट्राइक है, 160 158 के पास आते आते स्ट्राइक में 160 की स्ट्राइक में अनवाइंडिंग शुरू हो गई, तो आई विल कंटिन्यू होल्डिंग द रेस्ट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ऐसे चलता है। ठीक है। एंड टारगेट जो है अपना नेक्स्ट जो स्ट्राइक का रेजिस्टेंस है उसको लेते हो आप? हाँ जी, ठीक। मिनिमम फर्स्ट टारगेट वही फर्स्ट रहता है, टारगेट। और ओके। उसके बाद वो टारगेट अगर डायनामिक अनवाइंडिंग हो रहता रही देन यू आर गोइंग टू इंक्रीज दैट। है। यस यस। थैंक यू। Okay, next up is Nilesh Patil. सर मोहित सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। ये अपना चेंजिंग ओवाई जो है, जो हाईएस्ट वाई के बाजू वाला। हाँ जी, हाँ सर, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। ये बोल रहे हैं आप ओआई चेंज परसेंटेज? हाँ सर, एडिशन हाईएस्ट ओवाई एडिशन वाला जो है ना वो। हाँ, सो बेसिकली ये हो गई फर्स्ट हाईएस्ट ओआई हो गया आपका वो स्ट्राइक प्राइस जिसमें एज ऑफ नाउ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। 180 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कंसीडरिंग थ्री बेसिकली मैं यहाँ पे कंबाइंड पे क्लिक कर रखा है, तो दिस इज 3 मंथ्स एक्सपायरी एंड 170। बट कल के दिन में, दैट मीन्स फ्राइडे में, किस ऑप्शन में ज्यादा इंक्रीज आया? सबसे ज्यादा इंक्रीज आया। सो स्ट्राइक में 170 की स्ट्राइक में देयर हैज बीन 7% इंक्रीज, 165 की पुट की स्ट्राइक में देयर हैज बीन 17% इंक्रीज। बाकी जो भी स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, दैट इज अगर हम पुट की बात करें तो 165 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है ड्यूरिंग यस्टरडे फ्राइडे। या अगर ये लाइव मार्केट होती तो ड्यूरिंग टुडे टिल नाउ 9:15 से 11 बजे तक। ये आज का डेटा है, आज का चेंज है। ऐसे ही हम लिक्विडेशन देखते हैं कि किस में अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 200 की स्ट्राइक में 19% कवरिंग हुई, 175 की पुट स्ट्राइक में 15% कवरिंग हुई। ठीक है ठीक सर? है सर, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। Okay, next up is Ashish Arya. Yeah, hi. Good morning, Mohit. गुड मॉर्निंग।
Okay, so मोहित जी, आपने अभी दिखाया था कि जो आपने एक्सेल किया था कि आपने देखा कि कहाँ पे स्ट्राइक पे जब वो हिट किया तो ओआई डबल डिजिट में रिड्यूस हुआ है और एक जगह ओआई डबल डिजिट में एडिशन हुआ है, राइट? Right. सो आई एम टेलिंग व्हाट आई एम अज्यूमिंग जब आप रिडक्शन हुआ है ओआई में और अबव रेजिस्टेंस है तो आपने उसका कॉल लिया बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग वो ऊपर जाएगा, और जब डबल डिजिट में एडिशन हुआ उसी ओआई में तो आपने पुट लिया इज एज्यूमिंग कि दे आर बिल्डिंग अ पोजीशन एंड प्राइस विल गो डाउन, राइट? Yes, yes, perfect. Okay, ऐसा ही second है. thing is, okay, good. And second thing is about max pain. I'm just wondering, do you use max pain or do you think is it of any relevance in these trades? I don't use max pen, honestly, क्योंकि मेरा सारा काम ये स्क्रीन कर देती है. Right, बट right. सम पीपल ट्रेड जो मेरे जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो दे यूज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स पेन, क्योंकि मैक्स पेन आपको कई जगह मिल जाएगा, ठीक है ना. Right. बट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज नॉट देयर. Yes, yes. इसलिए इसलिए मतलब मैक्स पेन भी इट इज यूजफुल बट आई डोंट यूज इट. Okay, thank you so much, Mohit. Yeah. And this platform is very good, so thanks to the team. Thank you. Okay, next up is Darshan Kumar. Darshan Kumar ji. Hi, Mohit ji. Actually, you said that regarding IOCL, you actually took an entry around 152. Yes. You wanted to ride up to 165. Right. So that took actually some day, I think 6-7 days. And you were saying earlier that you want to hold for a few days. I mean, options you will not. I think Can you it just? took around 2 days. Okay. हाँ, You तो were in. मतलब सर बात वहीं पे आ गई ना कि मेरी ऑप्शन ट्रेड फिर वहां पे नहीं रहेगा. मेरे को 2 दिन ही रखना है. I'll not go beyond 2 days because third day if the move stops, so I am in trouble, right? But 165 का मतलब ये है कि I have a 10% का upside. See, there was an entry here. So you can use that for cash trading also, ठीक है ना. तो 7 तारीख को वो यहाँ था, ये इसका है, ये ठीक है. चलो यहाँ पे ये एंड which is 186 सर, क्या बात कर रहे हो. This is 186. I took an entry at, oh sorry, I took an entry at here. Yes. 5 और 6. तो 5-6 में 6 तारीख की क्लोजिंग इज एट 184. 6 तारीख 2 तारीख की ओपनिंग है 6 कहाँ पहुँच गया. हाँ 2 तारीख 2 and 5. तो देख लीजिए आप 152 से 177 क्लोजिंग प्राइस वाज एट हियर 175. इट इज बियॉन्ड माय टारगेट ना. 2 दिन में सेकंड एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ वाज हॉलिडे. अगर आपका ओपन इंटरेस्ट सजेस्ट कर रहा है ना तो दैट मूव विल कम इन 2 days. 2 दिन से ज्यादा वो लेगा नहीं. Okay. Next up is Verma. Verma K. हेलो मोहित जी. तो आपका सेशन अच्छा है. थैंक यू. आपका ये ओपन इंटरेस्ट वर्सेस बोलिंजर बैंड का प्रोसेस भी समझ में आया. बट व्हाट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाज हाउ यू आर प्लानिंग द स्टॉप लॉस. Okay, sir, I see stop loss basis the options chart. अब जैसे किसी में सपोज मैंने IOCL का ही एग्जांपल लेता हूँ. वो 152 मैंने 155 का से कॉल लिया, right? और ITM लिया 150 का. सपोजिंग आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. 150 का ITM लिया and it was suppose trading at 7 rupees. I'll open a 5-minute option chart, ठीक है.
और उसका नियरेस्ट स्विंग लो देखूंगा मैं. If price moves in swings, right? You know that. Whether it is a stock price, कोई भी instrument which is being traded, उसका the price of that instrument will move in swings. Right. ठीक है ना? तो that ways option का chart price chart भी बन जाता है. Right? So you are saying stop loss will be on the previous swing low or the nearest swing low on a 5-minute time chart for the option chart. Is that correct? Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you. That's it. Next up is Mr. Tarkeshwar Shukla. हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है. अच्छा, चवन जी और मोहित जी, आप दोनों लोगों को मेरा नमस्कार. मेरा सर एक छोटा सा प्रश्न था जो है, और प्रश्न जरा हटके था आज के सेशन से, क्योंकि आज आप जो है वो ऑप्शंस पे डील कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस पे. तो क्या सर, मैं जो आपने इंटरप्रिटेशन वाला टेबल दिखाया उसमें एबव रेजिस्टेंस इंटरप्रिटेशन करके और अगर ओआई में डबल डिजिट का चेंज हो तो क्या मैं इसको कैश मार्केट पे प्ले कर सकता हूं सर? मैंने उन्हीं स्टॉक्स में रोहित सेटअप लगा करके, और क्या सर मैं इसको कैश मार्केट में मतलब, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन नहीं बाई करना चाहूँ और सिर्फ कैश में मतलब वो ट्रेड लेना चाहूँ उन स्टॉक्स में जिनमें इस तरह का सेटअप बन रहा हो, तो 1 घंटे के रोहित सेटअप पर और कैश चार्ट पे क्या सर ये उसी तरीके से काम करेगा अगले 2 दिन में? और अगर 2 दिन में नहीं आता है कोई भी बाई तो मैं फिर उसको एग्जिट कर जाऊं जो है, या नहीं आता है तो? देखिए, जब तक प्राइस नहीं मूव करेगा तो मेरा ऑप्शन का प्राइस ही नहीं मूव करेगा ना. माय मूव नहीं करेगा सर, बेस्ड ऑन कैश प्राइस. जी सर. ठीक है ना? तो आई एम आल्सो प्लेइंग ऑन द मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन प्राइस ही है सर. प्राइस मतलब तो फिर हाँ, तो आप जैसे ये आईओसीएल का ही चार्ट आपके सामने, अगर आपने ये ब्रेकआउट के ऊपर लिया 2 दिन में आपने 10% लिया बेसिकली. अगर ये मूव नहीं करता तो मेरा ऑप्शन प्राइस भी नहीं मूव करता. ठीक है ना? लेकिन सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो डबल डिजिट वाले सर जो आप बता रहे हैं कि डबल डिजिट में मतलब एबव रेजिस्टेंस डबल डिजिट, तो कितने परसेंटेज तक सर? क्योंकि मैं बिलो सपोर्ट और वो डबल डिजिट में नहीं देखूंगा, क्योंकि उसमें फिर सेल वाला मतलब वो हो जाएगा. है ना? तो फिर वो फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा सर. मैं कैश की बात कर रहा हूँ, कैश में सिर्फ बाई करके होगा सर, है ना? तो जैसे आपने देखा कि डबल डिजिट में 50%, 44%, 2 स्ट्राइक में, तो टॉप के 2, टॉप के 3 किस परसेंटेज तक का सर आपका मतलब ये आकलन सही रहा है अभी तक? वहां तक का मूवमेंट 20% अगर रिडक्शन है ना, हाँ मैंने 20% एंड एबव जो भी होगा उसमें मतलब मूवमेंट आने के चांसेस हैं, वो भी अगले 2 दिनों में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. यस, प्रोबेबिलिटी बढ़. और 1 घंटे के सेटअप पे जो लोएस्ट लो होगा उस समय का ब्रेकआउट के पहले का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसको ट्रेल करता जाऊं सर? बिल्कुल परफेक्ट सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू चवन जी, थैंक यू. Next up, see, many of you are asking for the recordings. Definitely the recordings will be posted in the Strike YouTube channel. Okay, तो हमारा Strike YouTube चैनल YouTube में जाइए और strike_IC डालिए तो हमारा चैनल मिल जाएगा, उधर हम पोस्ट कर देंगे. और ये जो वेबिनार है ना सेक्शन लर्न में, मोहित जी थोड़ा दिखा दीजिए ना प्लीज. हाँ, इधर हम पोस्ट कर देंगे शाम तक. हाँ, इधर पोस्ट हो जाएगा शाम तक, तो इधर भी आप देख सकते हो. रिकॉर्डिंग्स इधर मिल जाएगा जिन्होंने भी ये सेशन मिस किया है और लेट ज्वाइन किया है. ओके, वन मोर थिंग, सॉरी चवन जी, सॉरी टू इंटरप्ट. वन मोर थिंग, अगर आप ऑप्शन सेलर है ना तो सेम हमारी जो स्क्रीन है स्ट्राइक ओआई इनसाइड, उस पे जय ने फॉर एन ऑप्शन सेलर he has already done a webinar how to find support and resistance. Okay, so that will also be helpful for you. If you are an option seller, so please go and see that also. Okay, next up is Rinku Aggarwal. Thank you very much for this wonderful session, sir. Mohit ji, just one question. Can you please once again tell how would the target would be decided in this? The target will be your next strike price in that direction. जिसमें open interest ज़्यादा है.
हाईएस्ट है। अब सपोजिंग किसी का 150 का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, एंड उसमें 155 पे भी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 160 पे भी हुआ है, बट आई सी द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन। मतलब एक मेरा आ गया हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट विल एट 150, सेकंड हाईएस्ट किसमें होगा, दैट विल बी माय टारगेट। थैंक यू। Next up is Mahidar Vaturi. Hello, sir. Hello, sir. Good morning. I am audible. या गुड मॉर्निंग हाँ सर, आप सर ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, वो इसमें एक बार टाटा स्टील ओपन करिए ना। टाटा स्टील में वो 110 का ओपन स्ट्राइक पर I'll again go to will like to say that ये हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, इट इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन। हाँ ओके सर। और एक क्वेश्चन है सर, आप एक महीने का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, एक वीक का देखते हैं? मैं सर 3 महीने का ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ। 3 महीने का कंबाइंड ओपन। बिकॉज अगर आप देखो मेरी स्क्रीन पे कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट इज फ्लिप्ड, इसका मतलब दिस इंक्लूड्स करंट सीरीज, मार्च, अप्रैल एंड मई सीरीज का ओपन इंटरेस्ट, तीनों का कंबाइन हो गया। कंबाइन में देखते हैं आप? ओके हाँ जी सर। अब इसके टाटा स्टील में टाटा स्टील की मोटा मोटी रेंज है 140 टू 160 एंड इट इज इन बिटवीन 150 टू। सर इधर सी स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सी स्ट्राइक में 110, इसका मतलब क्या है? सर आप अगर उसका ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो दैट इज 38 lakhs ओनली, ठीक है। 38 lakhs मतलब 3000%, सो मतलब उसमें इट इज हार्डली एनीथिंग। वो 4-5 लाख जहाँ पे 5.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 4-5 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है। सो दिस माइट बी समथिंग वी डोंट नो राइट नाउ, इट मे डेवलप लेटर, बट अभी इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, नॉट इवन 10% ऑफ द यूजुअल ओपन इंटरेस्ट इन एनी स्ट्राइक प्राइस। क्या 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 समझ सकते हैं उसका? वो 110 में ऐसा हो गया ना, वो आपको फिर तो उसमें अभी तो गिर जाए तो 110 में सपोर्ट हो सकता है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी हम कुछ नहीं बता सकते इसका। देखिए आप इस टाटा स्टील का नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट रहता है 5.5 करोड़ का, ठीक है। अभी इसमें 38 lakhs है सिर्फ, नॉट इवन 10%। 38 lakhs वाला इज नॉट अ स्ट्रांग हैंड। ठीक है। नेक्स्ट अप इज मिस्टर सरफराज मरफानी। सरफराज या हेलो या एक एग्जांपल लेके हमें स्टार्ट से ओपन इंटरेस्ट वगैरह लेके बताएंगे कि सर एक बार समझना था मुझे। सर आप क्या रिकॉर्डिंग देख सकते हो? बिकॉज मोहित जी ने 3 बार एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। आप रिकॉर्डिंग हम पोस्ट कर देंगे वेबिनार सेक्शन में, आप एक बार देख लीजिए, बिकॉज ये 4थी बार किसी ने पूछ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है लोगों को। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, मुझे सिर्फ एक कि अगर बिलो सपोर्ट है और अबव रेजिस्टेंट है तो ओपन इंटरेस्ट जो अपना चेंज होता है वो क्या कंसीडर करना है सर? रिडक्शन सर, डबल डिजिट में रिडक्शन। both conditions. हाँ, both conditions, because we are focusing on the pain of the underwriters, of the writers, sorry. दोनों में रिडक्शन होना चाहिए डबल डिजिट में सर। हाँ जी सर, तो वो उस डायरेक्शन में मूव आता जाएगा। अगर बिलो सपोर्ट के जाता है प्राइस एंड रिडक्शन हो रहा है तो देन द मूव विल कंटिन्यू इनटू दैट डायरेक्शन, प्राइस गिरता रहेगा। सरफराज ओके ओके ओके। नेक्स्ट अप इज लोकेश जोशी। हाँ लोकेश पूछिए। ये जो ओआई का आपने बताया है,
चेंज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज का, तो ये पहले देखना है या लाइव मार्केट में देखना है? सर मैं एंड ऑफ डे देखता हूँ पहले. I am of the process. I follow the process of selecting stocks first based on open interest change, and then trading in the market. क्योंकि लाइव मार्केट में हर स्टॉक का देखना, फिर उसके बाद चार्ट देखना, then it becomes too messy for me because I am a slow player. कुछ लोग कर पाते हैं बट मैं नहीं कर पाता. अच्छा, धन्यवाद. सुमित सेगल. सर जस्ट वांटेड टू आस्क कि मैं ना अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपोर्ट इट टू एक्सेल, ये कैसे करेंगे सर एक्सपोर्ट टू एक्सेल? राइट क्लिक कीजिए ग्रिड पे, राइट क्लिक करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हो. मोहित जी थोड़ा दिखा दीजिए ना एक बार. हाँ दिखा देता हूँ सर. यहाँ पे आपने स्क्रीन पे राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है. वो CSV या एक्सेल में आप कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू. राइट, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट अप इज ललित कुमार. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. सर मुझे इस ओवाई में बस ये पूछना था कि जैसे इसमें तो सारे के सारे वो आ गए, स्टॉक्स आ गए, लेकिन मेरी वॉच लिस्ट जो मैं यूज करता हूँ तो वो ना ऑप्शन दिख नहीं रहा. जैसे मैंने सेव करके रखे हैं वॉच लिस्ट में, तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं क्लिक करके सिर्फ पर्टिकुलरली उन्हीं स्टॉक्स को सर्च कर. मोहित जी थोड़ा स्ट्राइक हो इनसाइट्स में कीजिए. इसमें ना वॉच लिस्ट वर्कआउट नहीं होता है ऑप्शंस में. हमने वॉच लिस्ट, यानी तो आप क्या कर सकते हो, इधर सिंबल है ना, सिंबल में जाके सिंबल मोहित यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं. हाँ सर, मतलब इसमें अगर फ्यूचर में कभी ये ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं तो. नहीं, 1 सेकेंड, थोड़ा क्लियर कीजिए मोहित जी रिलायंस को. ओके, ये सिंबल है ना पहले कॉलम, उधर ये फिल्टर, इसमें ना टाइप करके आप सेव कर दीजिए. ये हमेशा सेव हो जाता है. जो स्टॉक्स चाहिए ना वो क्लिक करके रख दीजिए, वही आएगा हमेशा. ओके. एंड ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में अभी वॉच लिस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया. बाकी सब स्कैनर्स में, हीट मैप्स में, सब जगह पे आप वॉच लिस्ट रिलेटेड ही देख सकते हो. यस सर, इसमें नहीं दिखा इसलिए मैंने. हाँ, इसमें नहीं किया है अभी तक, बिकॉज इसमें ना हम अभी भी काम कर रहे हैं. ओके सर, ओके. यस. और सर एक क्वेश्चन और था, ये इस चीज को हम, ये ऑप्शन ओवाई को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा कि हम उसमें भी यूज कर सके? अभी फिलहाल मोहित सर ने बताया कि वो इंडेक्स पे नहीं कर रहे इसका, खाली स्टॉक्स पे ध्यान दे रहे, एंड इज अ बायर. दैट इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग आल्सो. यस सर. तो फिलहाल वो जब 1 मिनट डिले डेटा जाते हैं ना, अभी तो फिलहाल हमारा सिस्टम 5 मिनट डिले पे है, तो इसके लिए ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन स्टॉक्स. ओके. ओके सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. वर्मा. तो मोहित जी एक क्वेश्चन था, ये जैसे आपने अभी भी बताया ऑप्शन इंटरेस्ट चेंज सफिशिएंट नहीं है, राइट? तो टाटा स्टील का एग्जांपल देते हुए आपने बताया कि ऑप्शन इंटरेस्ट अभी इसका उतना स्ट्रांग नहीं है. नाउ व्हेन यू से दैट समथिंग इज नॉट दैट लेवल, सो आर यू हैविंग एन एवरेज कैलकुलेशन और दैट शीट शोज? So I am comparing it to my highest OI strike. हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जो स्ट्राइक है उससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं. टाटा स्टील में ही मैं आई एम कंपेयरिंग टू दिस 160 का कॉल. इट इज 5.44 करोड़, 38 lakhs है जिसके कंपैरिजन में. सो आई एम सेइंग इट इज नॉट दैट सफिशिएंट. And you are so at this moment, as per your setup, we are not taking IV into consideration. नहीं सर, IV बढ़ेगा तो मेरे लिए फायदा है ना. हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका कोई शीट में मेंशन नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको पूछा. नहीं, IV आई डोंट कंसिडर. आई कंसिडर कि मेरे को तो प्राइस मूवमेंट चाहिए. IV सी अगेन, अगर आपका वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, आई एम गोइंग टू एंटर एट दैट लेवल. ठीक है ना? तो IV will go on increasing for that. मुझे I don't see any level at which I have to enter. 50 के IV पे भी if I find a setup और I'm okay for that.
बिकॉज अगर मैं हायर प्रीमियम भी पे कर रहा हूँ तो हायर प्रीमियम विल अर्न हायर प्रीमियम। ओके फाइन। तो व्हाट यू आर सेइंग इज प्रैक्टिकली आईवी की वजह से, जैसे इलेक्शन आ रहा है, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी फर्दर, सो आईवी की वजह से अगर प्रीमियम ज्यादा भी होता है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू एज लॉन्ग एज द प्रीमियम इज एक्सपेंडिंग, यू आर ओके। यस ऑलराइट, थैंक यू। राजीव मित्तल, प्लीज। Hello. Yeah. Good afternoon, sir. Good morning. Sir, ऑप्शंस को कोरिलेट करने की बजाय सिंपल सेटअप क्या रहेगा टू स्टार्ट विद इट? मैंने कल ही सब्सक्राइब किया है स्ट्राइक का, तो टू स्टार्ट विद इट और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सिंपल क्या सेटअप बेस्ट है हमारे? जैसे अभी किसी ने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, कि कैश में कैसे ट्रेड करें। तो अगर आप बॉलिंगर बैंड का एक्सपेंशन वाला सिग्नल लेते हो तो दैट बिकम्स द सिंपलेस्ट सिग्नल। उस पे चार्ट पे दिखा देंगे एक बारी बस। और कौन कौन से पैरामीटर्स सिलेक्ट? कोई पैरामीटर नहीं है सर। आई शोड अ स्कैनर, स्कैनर टेक्निकल स्कैनर में जाओगे, देयर इज अ बॉलिंगर बैंड, राइट? वहां पे आप अर्ली बैंड वाइडनिंग करो, बास्केट यू सिलेक्ट एनीथिंग, आप अपना डेली, आर्ली, वीकली जो लेना है आपको लो, अर्ली बैंड वाइडनिंग करो, बट देन यू विल हैव टू सी द चार्ट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप सिर्फ कैश बाइंग कर रहे हो तो आप नीचे वाले नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको ऊपर वाले देखना। तो लाइक दिस। Also, Rajiv ji, there are many other things available in the system. ठीक है, जैसे कि रोहित मोमेंटम इंडिकेटर है, उसको भी थोड़ा हेल्प सेक्शन में जाके स्टडी कीजिए, सारा वीडियोस है उधर। मोहित जी, इफ यू कैन शो द हेल्प सेक्शन 1 मिनट के लिए। इधर सारा वीडियोस है, हमने एक्सप्लेन किया है। यस, ओके, इधर सारा वीडियोस है। ये मास्टरिंग रोहित मोमेंटम इंडिकेटर है ना, ये थोड़ा देख लीजिए, ये बहुत फायदा होगा आपको। ओके। Yes, since you have joined yesterday, we are not covering this topic as of now, Rohit momentum indicator in this. We are just covering options today. But going forward will be, we have done a lot of webinars on this also. Okay, you can see the webinars. So you will see also this. Okay, I'll do that. Okay. Yeah. Thank you. Rinku Aggarwal. Yes, sir. Sorry, I have raised the question again, sir. Sir, actually, there is some alert in this. No, as of now, alerts is not there. Okay. We need some time to build, because right now we are concentrating on RRG. ठीक है, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ्स बाय जूलियस डी केम्पर, वो डेवलप कर रहे हैं। Okay. तो उसके बाद ही हम अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, वो सब डेवलप करेंगे। Okay. It is just that we are a startup just now. We have just started building. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, but we are doing it. Sure, no issue. Any other questions? ठीक है, so Mohit ji, let us end. But before ending, Mohit ji, since you have been in the market for the last many years, कोई advice देना चाहते हैं कोई traders and investors को? नहीं सर, यहाँ पे जो आए हैं सब सीजन ट्रेडर्स हैं, सब अपने हिसाब से चलते हैं। आई विल ओनली से दैट यू नीड टू मास्टर ओनली वन सेटअप। अगर 10 सेटअप में अगर जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। एक सेटअप ढूंढिए विच इज इन लाइन विद योर पर्सनैलिटी और उसको मास्टर कीजिए, दैट्स इट। ग्रेट, देयर इज इनफ मनी टू बी मेड इन द मार्केट। और बाकी स्ट्राइक इज ऑलवेज हेल्पफुल। Thank you, sir. And thank you, Mohit ji, आने के लिए. Okay, it was very, we are grateful to you that you came and you shared your knowledge. So people who are here, thank you so much for attending. Keep using Strike, subscribe कीजिए, use कीजिए. We are going to make this the India's best analytical tool in the coming months. I'm sure a lot of things, even sector analysis आएगा, जहाँ पे
what we can vouch is the best 5 sectors what you need to look into for investments. That is what we are trying to achieve over there. RRG आएगा जो momentum पे help करेगा आपको. But जैसा मोहित जी ने बोला कि find your own setups and use it. And yes, thank you so much everyone for attending. Thank you Mohit ji once again. Yes, Thank you, we'll sir. Thank you, everyone. and regarding the data, definitely we'll upgrade it to 1 minute delay. Live markets तो कभी भी नहीं होगा, because NSE इतना चार्ज करते हैं कि आपको भी पे नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी पे नहीं कर पाएंगे. So 1 minute delay पे ही रहेंगे हम लोग, ठीक है. बट अभी तो फिलहाल 5 मिनट डिले पे है. प्रोसेस करने में 1 और मिनट लगता है, so 6 minutes. But we'll definitely working on it. RRG another 10-15 days में आ जाना चाहिए, डेवलपमेंट चालू है. So thank you everyone for your support. Keep using Strike. आपका फ्रेंड्स को भी बताइए. web.strike.money, please forward it, and please spread the message of Strike. I'm sure this is a wonderful tool. I'm sure this is going to help you a lot. So thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much.